Hi everyone, as I have covered your pharmacodynamics topic, in that first we have covered the principles of drug action, and in this lecture we are gonna completing with your mechanism of action. Okay, so mechanism of action, as I have told you in the previous topics, I will just revise it. There are four mechanism of action: by enzymatic action, ion, transporter and receptor. These are the four method by which the mechanism of action takes place. So what is the pharmacodynamics? What is pharmacology? The power of drug. Okay, so first of all, the enzymatic reaction. These four topics we will be covering in this lecture. So enzymatic reaction are of two type: एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन. व्हाट इज एंजाइम इंडक्शन? एंजाइम इंडक्शन का मतलब होता है कि एंजाइम को बढ़ाना, कैसे हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, दैट इज योर एंजाइम इंडक्शन. एंड व्हाट इज योर एंजाइम इनहिबिशन? एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है उसको रोकना. ओके, सो एंजाइम इंडक्शन हम लोग के दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव, एक नॉन कॉम्पिटिटिव. व्हाट हैपेंस इन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो हम लोगों का ड्रग है और जो हम लोगों का एंजाइम है, दोनों हम लोगों का सेम साइज का होता है. ओके, तो जो हम लोग का जो रिसेप्टर है उसमें आने से पहले दोनों के बीच में हम लोग का कंपटीशन होता है, एंड आफ्टर दैट ओनली इट क्रिएट एन इक्विलिब्रियम. उसके बाद क्या होता है? इट क्रिएट एन इक्विलिब्रियम, एंड दोस मीन्स after the competition the ion with sustain get attached to the enzyme site and started the reaction. बट नॉन कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होता है. नॉन कॉम्पिटिटिव में योर ड्रग एंड योर एंजाइम बोथ हैव अ डिफरेंट साइज, तो देर इज नो कॉम्पिटिशन. ओके, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग का एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है. एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे होता है? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हम लोग का रिएक्शन होता है. ओके, सो कोवलेंट बॉन्ड से हम लोग का ये नॉन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. इसमें जो Km है दैट इज इंक्रीज द मैक्सिमम, दैट हियर आल्सो द Km increase, but Vmax is unchanged over here, but here the Vmax decreases. Now if your question is coming that ma'am what is Km and Vmax, you might go to my last lecture where I have explained you all the terms in that. So there I have explained you about the Km and Vmax. Okay, then what happens in competitive is your increase in the substrate during the action displaces the drug and maximum reaction velocity is attained. If two person is competing, okay, अगर हमारे पास दो इंसान है जो कि एक दूसरे को कंपटीशन की भावना से आपका एक्शन कर रहे हैं, और दो ऐसे इंसान हैं जो हम लोगों का कोई भी हम कंपटीशन नहीं है, बट दे आर फाइटिंग और एट लास्ट दे आर एडजस्टिंग बाय द कोवलेंट बॉन्ड, तो आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेस्पॉन्स किसका आना चाहिए? ऑब्वियसली जो कंपटीशन कर रहा है उसका. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो एंजाइम है वो ड्रग को डिस्प्लेस करके अपना मैक्सिमम रिएक्शन इसमें देता है इन कॉम्पिटिटिव. बट इन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? यहाँ पे एक रिएक्शन होता है इनहिबिटर एंड एडजेसेंट साइट में. इट ऑल्सो वर्क्स, इट ऑल्सो गिव यू द फंक्शन, बट द कॉम्पिटिटिव गिव्स द मोर फंक्शन देन योर नॉन कॉम्पिटिटिव. ओके, now comes to the other side, that is enzyme inhibition. See, in every suspect there is a bad and a good, somebody to attain, somebody to lower, somebody to eager, somebody to sleeper. Okay, so this is the same thing enzymatic reaction में. अगर इंडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं इनहिबिशन का भी जरूरत है, उसको रोकने का भी जरूरत है. तो इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग का एंजाइम जाता है, एंजाइम जाके हम लोग को उस प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? जो काम होता है वो रुक जाते हैं. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स ऑफ इट. आई थिंक आई माइट बी क्लियर टू यू. फर्स्ट में आपको एंजाइम इनहिबिशन का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल, methotrate if is 500 times more potent than DHFN. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम इनहिबिशन. क्यों? क्योंकि इसको तो डीनेचुरेशन करना है, इसको तो रोकना है अपने फंक्शन को. ओके, सो ओके, व्हाट इज DHFA? DHFA इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. व्हाट इज दिस? डाइहाइड्रोफोलेट reductase. I'm not writing the full name, I'm just giving you an example. Okay, so this is the thing. Now the second thing, what is the second examples you might give in your here the enzyme induction? I'm just rubbing it so that I could write all the examples over here.
I think I'm clear to you with inhibition because it is very easy. Okay, now come to your example section over here. आपके university exams में भी the main question comes in your competitive and non-competitive and the examples of it. Okay, so the example is a physiostigmine into acetylcholine gives the reaction on neostigmine. Okay, physiostigmine, acetylcholine, both react on your cholinesterase. This both are your competitor. Okay, this both are your competitor acting on your cholinesterase. Okay, now example, second example is sulfonamide. Second example, sulfonamide react with PABA on your bacterial action. What is this? The example is all about. This example is all about your competitive. Okay, this example is about competitive. Now we are done with your enzyme part. Now I am coming to your iron part. Okay, now what is iron? See, जहाँ पे आपका iron होगा वहाँ पे आपका iron receptors होगा ही होगा. I just make you a clearance कि हम लोग का आयन का सेक्शंस कहाँ होता है. किसी भी सेल्स में हम लोग का दो पार्ट होता है. ओके, वन इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर, वन इज योर इंट्रा सेलुलर. सो द आयन चैनल्स क्या होता है? अ थिंग विच कनेक्ट टू योर एक्स्ट्रा सेलुलर टू योर इंट्रा सेलुलर. दिस थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर कि आयन कहाँ पे होता है, कैसे होता है. इन माई फर्दर लेक्चर्स ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको बुकिश डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, बट आई विल गिव यू अ example by drawing your diagrams only. Okay, these topics are little easy, but as we go further we're going to a complex one. So we are starting with your iron. For example, this is your extracellular, this is your intracellular. So the iron channels is over here. Okay, so this might be an iron channel. So iron में क्या होता है? Iron generally present in between the phospholipid layer. Where it is present? It is present in between phospholipid layer. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कहाँ पे ये होता है? जब तक हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे होता है को, तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कैसे होगा. ओके, नाउ सेकंड थिंग, एक्ट एज अ रिसेप्टर. व्हाट इट डू? इट हैव अ रिसेप्टर. इट हैव a receptor. Now third thing, what it do? It do drug bind into the channel and affect out the movement. What it do? For example, drug it get bind into the channel and then affect to bone. Okay, now example. What is the example of it? Example is your La obstruct the Na channel. La obstruct Na channel. First example. Second example, nifedipine blocks the calcium channel. Nifedipine blocks your calcium channel. Okay, so this is the example with the iron. Now I am coming to your transporters. Now I am coming with your transporters. What is the transporter is all about? See, it might be, see, I am making you 3 diagrams over here. Please, my diagrams are very vague. You make a good diagram. Okay, 3 diagrams over here of transporters. First, if this is the situation, first I name it as your substrate. Okay, this is your substrate and this is your transporter. After it reaches to the target, then it is inhibited. Okay, and this is the whole diagram. Inhibitor, transporter. Okay, transporter, inhibitor. So this is the diagram of about the transporter and the thing. See, this is nothing. For example, आपको लगता है कि आपको किसी चीज को भेजना है, ठीक है. आपके पास मान लीजिए कि एक पैकेट ऑफ
मिल्क है. ओके, नाउ हाउ यू कैन सेंड इट. यू विल गिव टू अ चाइल्ड एंड से कि आप उसको वहां तक पहुंचा के हो. एट दैट टाइम द मिल्क का पैकेट इज सबस्टेट एंड दैट गाय इज अ ट्रांसपोर्टर. यू जस्ट मीन्स आपने उसके बाइसाइकिल में रख दे, ही वेंट देयर एंड send it to the person which they needed. Okay, so what is there? That is an inhibitor. Okay, this is nothing, this is just a diagrammatically basis. और आपको बस concept समझना है कि transporter होता क्या है. Okay, so the example is, what are the examples? Decipramine. Okay, decipramine your decreases the neural uptake of more adrenaline. Decreases the neural uptake of adrenaline. जब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन ज्यादा हो रहा है, न्यूरो रिसेप्टर ज्यादा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिप्रेनिन को बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर इन द साइड दे देते हैं. उससे क्या होता है कि उसका अपटेक को हम लोग रोक सकते हैं. सेकेंड, फ्लोसेंटाइन न्यूरल 5-HT ट्रांसपोर्टर. It goes through 5-HT transporter. Please go through these examples. The examples are very much important because the concept is very easy. Now we are done with your transporter part. Now come to your receptor. Now come to your receptor. What is receptor? Receptor is a macromolecule or binding site located on the surface within the effector cell that serves to recognize the signal molecule. So, what is this? For example, this is a macromolecule. Okay, so macromolecule, this is a macromolecule. This is a binding site. So this is a binding site. Okay, which is located within the effector cell. Which is located? This is located into the effector cell. Where it is located? It is located in your effector cell. Okay, and it serves or recognize the signal molecule. And what is recognize? Recognize the signal molecule. This to be very clear to you that what is receptor. Receptor is a macromolecule which having the binding site which are present in the effector and which recognize the signals of the molecule. Okay, what it does, it initiate the function or the response to it, Okay, this is the thing, and few terms are also there. I will explain that in your next lecture. So this is all about your receptor. So the mechanism of action, I must be very clear to you. There are 4 things: enzyme, ion, transporter, receptor. Receptor, I am starting with the receptor. Receptor is a macromolecule which is having the binding site which is present in the effector cells, which recognize the signal molecule and initiate the response to it. Come to the transporter. There are diagrams I have shown you about the transporter. There are the molecules which are attached to the transporter. Then what it does? It carries the molecule and give them the function to there. Okay. Then comes to the ion. Ions is present in between the phospholipid. What it does? It means collect. There are receptors into it. Drugs went into the ion site. There they get attached and starts their functioning. And enzyme, as I have told you, there are inhibition, there are induction. In inhibition, in induction there are 2 types: competitive, non-competitive, and everything I have told you with the example. Thank you so much. In the next lecture I am being starting with some terms. Please listen to it. Please read about the previous lecture and study it repeatedly so that these basic things cannot go out of your mind. Thank you so much. We will be meeting in the next lecture definitely. Thank you so much.